So how many students have science worksheet? Everybody? Very good, very good. Hands down, hands down. तो बेटा हम थोड़ा सा बिकॉज टाइम की हमेशा हमारे पास कमी है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द टॉपिक. लेट्स डिस्कस, क्योंकि ये टॉपिक आप कर चुके हैं. जो जो डाउट्स होंगे हम साथ साथ बात करेंगे. और एक मिनट. यस, आर्यभट्ट. हरसीरत. हरसीरत, देयर इन आर्यभट्ट. हरसीरत, कम क्लोज टू द माइक. हाँ जी बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन, लीव्स अपीयर ग्रीन एज दे मैम absorb green light. रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट बेटा, रिफ्लेक्ट जो बाहर भेज रही है, बाउंसिंग बैक. योर शर्ट अपीयर्स रेड बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग रेड लाइट, है ना. सिट डाउन. रिफ्लेक्ट, आंसर इज रिफ्लेक्ट, ए. बैठो बेटा. नेक्स्ट इज आर्किमिडीज. गुरजोत. आर्किमिडीज इज देयर. गुरजोत. Archimedes, are you able to hear me? Yes. Gurjot, बोलिए बेटा. Question number 2. A option. Option A. Chlorophyll containing cells in leaves absorb sunlight. So chlorophyll absorbs sunlight. Stomata takes carbon dioxide. इधर ब्रह्मगुप्त boys, middle row. Second bench. बेटा सीधे होके बैठ बेटा. The boy sitting alone. सीधे होके बैठ. सीधे बैठ बेटा, सीधे. बॉटल नीचे रख दो. बॉटल, प्लेस बॉटल नीचे रखो. टेबल से नीचे रखो. वेरी गुड. सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट. कौन सी लाइट? रेड एंड ब्लू लाइट. लिख लो, साथ में लिखो कि क्लोरोफिल कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट. स्टोमेटा takes in CO2, gives out O2. So takes CO2 by stomata. Xylem, long pipes in the plant through which water transports upward. It is transported upwards. And then synthesis of food. ठीक है, दोबारा से हम अगर बताएं. क्लोरोफिल, ये लिखना है. What is the function of chlorophyll? Absorbs light. Stomata takes in CO2. Then xylem transports water and minerals from root to leaves, and in leaves 6 molecules of carbon dioxide combines with 6 molecules of water in the presence of light to form C6H12O6 glucose and gives out 6 molecules. बाहर भेज देता है, बाहर निकाल दे. So option A is correct. अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, गुरनूर, गुरनूर फ्रॉम ब्रह्मगुप्त, आ जाओ बेटा। ऑप्शन कौन सी है बेटा? ड्यू टू, हाँ बोलिए। ब्रह्मगुप्त की लास्ट गर्ल का हाथ खड़ा है, आप आ जाओ बेटा। आप खड़े रहो, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग रिमेन देयर, द गर्ल इन येलो शर्ट कम फॉरवर्ड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। सो व्हाट हैपेंस दैट ड्यूरिंग विंटर्स, what happens, there is less light, sunlight obviously, due to which less synthesis of synthesis, पूरा मैं लिख देती हूँ। अब एक क्लोरोप्लास्ट है, एक बॉक्स है, सी हियर, एक बॉक्स है, सी हियर, ग्रीन कलर्ड। ये मैंने कुछ येलो पिगमेंट्स बनाए और कुछ रेड पिगमेंट्स भी है, but you can see, because pigments कई तरह के हैं, you can see that, but because there is more of green pigments, more of chlorophyll, so this box appears to be green in color, right? But during winters what happens, there is less synthesis of chlorophyll, है तो सही, but chlorophyll की synthesis कम हो गई। ये पिगमेंट पहले भी थे, ये नहीं कि मैंने अब डाले हैं, ये पहले भी थे, इतने ही थे। But because there is less chlorophyll, that is why this leaf, you can see this, है ना, शायद आपको क्योंकि बोर्ड ऐसा है तो ऐसे आपको नजर नहीं आएगा, तो this leaf may appear yellow or red because यहाँ पे जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर मास्क कर रहा था, उसको छुपा रहा था बाकी के कलर्स को, यहाँ पर मास्किंग इफेक्ट खत्म हो गया। सो आंसर इज सी। So here, due to less availability of sunlight, the amount of chlorophyll decreases and thus its masking effect, masking का मतलब होता है उसको छुपाना, दूसरे कलर्स को छिपा देना, वो खत्म। So answer is C. Next is Euclides, Ekambir, Ekambir from Euclides. Question number 5. देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एनवायरमेंटल हेल्थ का है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। कौन सा बेटा? ऑल द अबव। देखिए हम, देखो दोबारा से देखो, हम कह रहे हैं क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ, तो एनवायरमेंट की हेल्थ किससे होगी? आप खड़े रहना बेटा। ब्रह्मगुप्त, हाँ जी, द गर्ल इन ब्लू शर्ट, आ जाओ।
It is A. Environmental health means controls air pollution. Right? So answer is A. बैठो बेटा. Controls air pollution by absorbing carbon dioxide. बैठो बच्चे. ब्रह्मगुप्त बैठो बेटा. A goat eats away. Yes, Euler. यूलर पे बेटा मिडिल रो में फर्स्ट बेंच पे जो रेड शर्ट में बच्चा है वो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 6. एक गोट ने बेटा इधर सामने देख सारे लीव्स खा लिए. फोटोसिंथेसिस तो बंद हो गई बट प्लांट इज स्टिल लिविंग. हाउ? फूड के बगैर वो कैसे रह लेता है? माइक ऑन कर बेटा. नहीं ऑप्शन ऑप्शन ए बाय यूजिंग रिजर्व फूड. है ना? तो जैसे हम फास्टिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है कई कई दिन फास्टिंग करते हैं विदाउट ईटिंग. है ना? देयर आर सम रिलीजियस पीपल हु फास्ट फॉर अबाउट 1 month बाय हैविंग सिंपल वाटर. कुछ और नहीं लेते, सिर्फ पानी पीते हैं. ठीक है? हाउ दे कैन सर्वाइव? बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रिजर्व फूड इन अवर बॉडी. That's why we can survive. Likewise, plants also have reserve food. Next is glucose. Glucose क्या है जो हमने किया? That CO2 combines with water to form C6H12O6. This is glucose. बाकी तो है ये कि ऑक्सीजन भी निकल गई. Glucose, you have studied in class 6. It is a carbohydrate. By photosynthesis, plants synthesize only glucose. How do they synthesize proteins? Yes, from gauze. हाँ जी, गॉज में से raise your hands. गॉज में रोल नंबर 15 15. आ जाओ आगे आओ जल्दी से. How do plants synthesize proteins? They synthesize carbohydrates by photosynthesis. How do they synthesize proteins? बेटा somebody help. Mic on करो. कौन सी ऑप्शन बेटा? क्वेश्चन 7th क्वेश्चन कि हाउ डू प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन्स? ए ऑप्शन. पूरी ऑप्शन बोलो, मतलब लाइन बोलो बेटा. Plants synthesize both carbohydrates and proteins by photosynthesis. नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस में तो सिर्फ ग्लूकोज बना बेटा. प्रोटीन कैसे बने? तो नहीं बने. चलो अब तो आपको आंसर मिल गया है. चलो बैठो, बाकी बच्चे बोल रहे हैं. बेटा प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया. ग्लूकोज से आगे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स बनाए. उसके बाद प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन एब्सॉर्ब की in the form of nitrates, right? And add nitrogen in carbohydrates to form proteins. तो पहले तो आपने क्या लिखना है कि write down everybody. Carbohydrates have carbon, hydrogen and oxygen. C6H12O6. Proteins have carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Everybody, Archimedes, girls, इधर लिख लो ये. राइट डाउन, इंपॉर्टेंट है ये.
So plants absorb nitrogen. First point. Plants add nitrogen to carbohydrates forming proteins. So option B is correct. चलिए, then read case study. I am giving you 2 to 3 minutes और उसके बाद ये reason assertion के 3 questions कीजिए. Read the case study. यूलर में बेटा कहाँ पे वर्कशीट है आपकी? फर्स्ट बेंच पे बेटा वर्कशीट निकालो बेटा. हाँ, वेरी गुड. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केस स्टडी करो. और रीजन असर्शन की ऑप्शंस आपको पता है. ऑप्शन ए होता है बोथ assertion and reason are correct. And reason explains assertion. B है both. अब मैं A लिख रही हूँ. A means assertion and reason are correct, but reason does not explain assertion. Assertion correct, reason की statement wrong है. Assertion incorrect, reason correct. चलिए, read the paragraph. Do assertion reason. यूलर में से हरमीत एंड लक्ष्य, ये दोनों स्टूडेंट्स आएंगे. हरमीत एंड लक्ष्य, आ जाओ. माइक ऑन करो बेटा. लक्ष्य इधर फ्रेंड. ओके. हरनीत बता. यस हरनीत, टेल मी. असर्शन करेक्ट की इनकरेक्ट. लीव सरफेस एरिया अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट मींस एक ये ब्रॉड लीफ है और एक ये नैरो लीफ है. ठीक है. विच हैव मोर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ए की बी? बातें नहीं. So A has more rate of photosynthesis because it has more surface area. यही वाला लीफ है. लेट अस से ये है और हम इसको रोल करते हैं. हमका लीफ तो वही है, इसको हमने रोल कर दिया. क्या सेम फोटोसिंथेसिस है? नहीं. जितना ज्यादा लीफ फैला होगा, एक्सपेंडेड होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. सो असर्शन इज करेक्ट. Larger leaves can trap more sunlight. This is true ki false? This is true. बैठो बेटा, बैठो. Why this larger leaf has more rate of photosynthesis? Because it receive more sunlight. So option A is correct. इसका आंसर क्या है? A. आंसर is A. हाँ जी.
यूक्लाइड्स में बेटा, यूक्लाइड्स में बेटा जो टुवर्ड्स विंडो है, लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो आ जाओ, इन ब्लू शर्ट, कम फॉरवर्ड विद योर असाइनमेंट, आ जाओ, ऑन करो जरा माइक। हाँ जी बेटा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इफ सम ऑफ स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक्ड, ट्रू की फॉल्स? व्हाई? स्टोमेटा है, लीफ के ऊपर ये पोर्स है, स्टोमेटा पोर्स ही है ना, ये पोर्स है, ये ब्लॉक हो गई, तो फोटोसिंथेसिस पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? It's true. It's true, beta. Why true? Because through stomata, carbon dioxide enters inside. If some stomata gets blocked, there will be less entry of carbon dioxide in the leaves. Right? So, assertion is correct. Reason देखो बेटा, Euclid's reason का देखो. Plants take in oxygen for respiration during daytime. True की false? False. False है. Plants during daytime, plants absorb carbon dioxide only. So option C is correct. Second का assertion reason कौन सा correct है? C. Assertion correct, reason false. क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाँ जी, कौन दे रहा है मुझे आंसर गॉस में से? somebody from गॉस. मिडल रो में से बेटा, फर्स्ट बेंच पे जो मिडल मिडल रो में फर्स्ट बेंच पे जो राइट साइड में बॉय आ जाए, आ जाए फर्स्ट बेंच, आ जाओ विद रेड शर्ट, आ जाओ, आओ वर्कशीट लेके आओ, ऐसे नहीं आना, अपनी वर्कशीट लेके आओ. हाँ बोलो, ऑन करो, बोलो. मम्मी ए ऑप्शन. कैसे? बोलो बेटा कैसे है? अच्छा छोड़ दे, कैसे छोड़ दो. ये रूट हेयर है, ये इतने सारे हैं, ये कम है, किसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, ए में कि बी में? ये तो बेटा तेरे दोस्तों ने आंसर दे दिया ए में. अच्छा अच्छा, मैं कहती हूँ ये ठीक है, ए में. क्यों? वाई? बिकॉज देख, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे. अब यहाँ से सिर्फ इतना पानी एब्सॉर्ब होगा, बट यहाँ पे इतने एरिया में दो रूट हेयर आ गए हैं, तो मोर वाटर इज रीएब्सॉर्ब, बिकॉज यहाँ पे लिखो मोर द रूट हेयर. बैठो बेटा, इसलिए इधर उधर नहीं लिखो, सुस्ती मत मारो. बैठो बेटा, गो टू योर सीट. मोर द सरफेस एरिया या मोर द रूट हेयर, मोर द रूट हेयर, मोर द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. बेटा बॉटल्स छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन, कॉन्सेंट्रेट on me only at this time. Write down on your worksheet only. More the root here. More the surface area for more absorption of water and minerals. So option A is correct. Next is question number 9. Brahmgop. Harmanpreet. Harmanpreet, Brahmgop.
आजा बेटा। राइजोबियम के बारे में इनकरेक्ट बताना है बेटा। पूरी लाइन बोलो, क्या है? Yes, it can make its own food. This is incorrect. Rhizobium. Very good, beta. बैठो. What is rhizobium? It is bacteria. Lives in nodules. हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स, छोटे छोटे एक स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, आंसर बी, बॉम्बे, लेग्यूमिनस प्लांट्स। सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। व्हाट इज सिम्बियोसिस? म्यूचुअली बेनिफिशियल। टेक्स शेल्टर एंड फूड फ्रॉम प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट से लेते हैं खाना ये। एंड गिव्स फिक्स्ड नाइट्रोजन टू द प्लांट। फिक्स्ड ना भी याद रहे, गिव्स नाइट्रोजन टू द प्लांट। सो लेना देना, बार्टर सिस्टम है। तुम मुझे शेल्टर दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा। So it cannot make its own food. This is wrong. Question number 10. Question number 10. Euler. Euler में से बेटा towards ball. सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट है राइट साइड में वो आ जाए। दीवार की तरफ, विंडोज वाली तरफ नहीं, दीवार की तरफ जो है उस तरफ सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट है राइट साइड में कहाँ? Yes, ma'am. एकदम क्वाइट, only one student will tell. So this X organism, it is in between autotrophic and heterotrophic nutrition, or you can say the X, it is both autotrophic as well as heterotrophic. So what is X beta? Pitcher plant. It is pitcher plant. बातें नहीं बेटा, इधर girls boys इधर. So answer is pitcher plant. And you can see here also. Let me show you. This is pitcher plant, beautiful pitcher plant. So you can see this is red colored pitchers. इसकी लंबी सी स्टॉक होती है। ये कुछ तो आपको रेड नजर आ रही है, बाकी स्टॉक जो है, और यू कैन सी हियर, ये देखिए ये पिक्चर की ये स्टॉक है, ठीक है। और अगर ऊपर जाके देखेंगे इट इज फॉर्मिंग लीफ। एक और यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है, इसकी स्टॉक ये है, एंड देन इट फॉर्म लीफ। तो पिक्चर प्लांट में लिख लो
The picture is modified leaf. Write down, everybody. We still have 8 minutes to go. Brahmgop idhar samne. Picture plant has modified leaves into picture. And its leaf stalk. Stalk means uski jo stems का structure है, its leaf stalk gets expanded and green to perform photosynthesis. To perform photosynthesis. Everybody बेटा जल्दी से. तो अगर हम देखेंगे कि picture plant, it is autotrophic because it has green expanded structures. It is autotrophic. But because it eats insects, it is dependent on living organisms for its survival. Therefore, it is both autotroph and heterotroph. Why do plants require nitrogen? Who will tell? Raise your hands. Yes, Euclides, the girl, come forward. Nitrogen. Nitrogen they fly. Nitrogen. For protein synthesis, write down. Plants require nitrogen for protein synthesis. ठीक है? एक क्वेश्चन हम और करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. Yes, who will give them answer? क्वेश्चन नंबर 11. ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट में एक गर्ल का हाथ खड़ा है. आ जाओ बेटा, ये गर्ल इन येलो शर्ट. आ जाओ. करो आंसर दो बेटा. चले गए ये तो. यस, गिव मी द आंसर. अपना आर्यभट्ट ऑप्शन. Ma'am, ऑल ऑफ द अबव. बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल ऑफ द अबव. ये मैंने पिछली बार समझाया था. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग. उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. वी हैव 2 मिनट्स. फंगस एंड ए ट्री आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. फंजाई. हाँ जी बेटा. please tell 9th and 10th answer. 9th is B. 9th and 10th. 10th is B, pitcher plant. 9th का आंसर है इट कैन मेक इट्स ओन फूड. ये गलत है. और 10th है कि बोथ ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ कौन सा है? पिचर प्लांट. Fungus and a tree are communicating with each other. Fungus is requesting the tree to give some shelter, but the tree refuses because it is fearful of some disease. Fungus told something to tree, after which the tree gave home to fungi in its roots. What did the fungi tell the tree? हाँ जी, यूक्लाइड्स. आ जाओ बेटा. द गर्ल इन ब्लू शर्ट. बस लास्ट क्वेश्चन. हाँ. ए नहीं है, ये जाता है बेटा. द ट्री fungi said that I will form mycorrhiza. How fungi helps the tree? More absorption of water. Then I will protect you from infection and 3 points आ गए ना.
But is, listen to me, last thing. लास्ट पॉइंट है, ये लिख लेना, हम बस इसके बाद बंद करेंगे. सो व्हाट इज माइकोराइजा? इट इज symbiotic association. Between plants and some fungi. लिख लेना, माइकोराइजा क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन. प्लांट्स गिव शेल्टर एंड फूड टू फंगस या फंजाई. और फंगस क्या करती है? इंक्रीजेस water absorption for plants, and second is protects plants from diseases. This is mycorrhiza. So this is all for today. 2-3 questions रह गया. We will discuss next time. Bring this sheet next time. ठीक है? I will ask few questions from you. एक test type हम class में लेंगे, and then we will move further. Okay, beta. Thank you. Thank you, students. Bye bye.